बाबूशाही देख रहे सारे का स्वागत है। चंडीगढ़ सुखना लेक ते इंडियन एयर फोर्स वालों एयर शो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। दस दिए कि 6 अक्टूबर ते 8 अक्टूबर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 에ਅਰ ਸ਼ੋ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਹਰਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 에ਅਰ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 에ਅਰ ਸ਼ੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ 에ਅਰ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ 에ਅਰ ਸ਼ੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨੇ ਸੋ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਝਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 에ਅਰ ਸ਼ੋ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। देख सकते हैं हमारे गरुड़ कमांडोज को जो कि अपने हथियारों से लैस होकर के अब पास पड़ी बोट में अपने अन्य सदस्यों को भेजेंगे। उसके बाद वे सदस्य उस बोट पर सवार होकर के दुश्मन के इलाके में अगली कार्रवाई के लिए निकल जाएंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि एक और बोट है और कमांडो की ओर अपना हाथ हिला करके इनका अभिवादन करें। I'm sure you all have woken up to the thundering of rotors every day in the morning. Coming in front of you is 2 Chinook helicopters flying in as beam formation. Ladies and gentlemen, these helicopters are based here itself in your city beautiful Chandigarh. दर्शकों, अब आप हमारे शिनुक हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटीज को देखेंगे। आज हमारे 2 शिनुक हेलीकॉप्टर दाएं और बाएं जा करके आपके सामने हमारा हेलीकॉप्टर क्या कर सकता है इसकी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। हमारे विमान ने अभी आपके सामने 360 डिग्री का एक टर्न लिया। दो रोटरों वाला यह विमान हाल ही में भारतीय वायुसेना में वर्ष 2019 में लाया गया था। The game-changing modern Marvel is capable of performing transport operations, underslung operations, winching operations, medical evacuation, airdrops, tactical insertion missions and special operations. Chinook is an all-weather aircraft which is capable of carrying out all the roles under the sky of darkness. This capability is greatly enhanced by the state-of-the-art night vision devices. Night operational capability speaks volumes of the modern machine and the plethora of roles that can be envisaged.
Ladies and gentlemen, you can see the Chinook flying at ultra low levels. This requires precise timing and coordination of body and mind. And this is achieved by the aircrew through immense hard work and skill training. While it seems street to the eyes, do not try this at home. ये पीछे हो भाई टच करके खराब मत हो गया मुझे पता कहाँ पे कैमरा है मोबाइल से नहीं आया ऊपर जाने Wing Commander Vishal Jain, commanding officer, who is flying with the national flag as Ensign 1. Wing Commander Shailesh Singh and Wing Commander Amit Badiyal are carrying the Indian Air Force flag as Ensign 2 and Ensign 3. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the light combat aircraft Tejas. Flying the Tejas is Group Captain Dinesh Kumar Dhankar. Tejas is a lightweight, multi-role fighter developed indigenously by the Hindustan Aeronautics Limited. It is now time for one of our oldest aircraft of the Indian Air Force to take over the powered aircraft. The aircraft you see today is being flown by Wing Commander Amit Thopankar and Wing Commander A.K. Singh. They both are qualified. Wing Commander दर्शकों, अब आपके सामने है डेकोटा DC-3 विमान, जो कि 1944 में निर्मित हुआ था। इस विमान का भारतीय नाम परशुराम है, जिन्हें उनकी शक्ति के लिए संसार में जाना जाता है। यह हमारी भारतीय वायुसेना की परंपरा एवं संस्कार को प्रदर्शित करता है, Flying in next will be the Vajrang formation. Right in front of you, Vajrang formation. Group Captain Chintada Suresh. The Shamsher formation. Captain C.P. Deshpande and the leader of the force is Wing Commander H. Vivek. She goes.
In the Chester, Rakhar, and the Sukhoi 30 enter the Chakravyuh from your right as a part of the transformer package. The Rafale today is being flown by Group Captain Abhishek Tripathi and the Sukhoi 30 is flown by Wing Commander Abhinav Singh. Do notice how gracefully they glide past you at a speed of just about 200 kilometers per hour, carrying out the slow speed run. को तेजस लड़ाकू विमान की आकृति में देख सकते हैं, जो कि भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। As they fly over us, let me inform you that Surya Kirans 1, 4 and 7 form the spine of all formations, whereas the even numbers 2, 6 and 8, that is Squad Leader Garg, Wing Commander Alok and Squad Leader Himanshu form the right wing, and the odd numbers 3, 5 and 9 of has jumped from many aircraft of our Air Force inventory, namely AN-32s, Agro, Dornier, IL-76, Me-17 helicopters, C-130, AN-32 of Paratroopers Training School. On 9th August 1987, Indian Air Force, the sky is colorful and fanned hundreds of desire for the people to join the Indian Air Force. Our physically fit instructors dressed in white overalls are truly a representation of the Milky Way in this. Dear audience, I now request you to put on your sunglasses and look straight up. The skydivers are out of the aircraft and are now hurling towards us. Try to locate the free-falling birdies of the team before they deploy their chutes, as the rest of the jumpers are gliding towards the landing area right behind us. You can just make out the jumpers joining their parachutes together to form the most incredible maneuver to the power. The next display is aerial firefighting involving use of aircraft and other aerial resources to combat wildfires. Ladies and gentlemen, right in front of you, you can see the Me-17 V5 helicopter approaching with a Bambi bucket attached to the underside of the helicopter. दर्शकों, तो अब आप देख पा रहे हैं भारतीय वायुसेना के मी-17 हेलीकॉप्टर का कारनामा। इस कार्रवाई को बैम्बी बकेट ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में एक बार में 3500 लीटर पानी ले जाया जा सकता है और हमने सुखना लेक का पानी वापस भी लौटा दिया।
दर्शकों, अब जो कार्रवाई होने वाली है उसे हेलो कास्टिंग कहा जाता है और इस अभियान में हमारे कमांडोज को दुश्मन के And now you can see the aircraft making an approach for the insertion of the Gemini boat into the water in front of you.